plantation. Spatial means it could be on boundary, खेत के बंद पे हो सकता है. Low density plantation हो सकती है, high density block plantation. That means more number of seedlings per hectare. Maybe 10,000, 20,000 energy plantation की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20-25 हजार plants जो है per hectare plants किए जाते हैं. That means more demand of seedlings from the private nurseries particularly. So this is why the topic has been chosen. So why we need to propagate better plant, this quality planting material of agroforestry species, industrially important agroforestry species. So particularly, I would talk on clonal plantation. So because when we are taking this material from the seed that has a lot of variation, so whatever clones we have developed, or if we are able to produce it vegetatively, whether it is through cuttings, through tissue culture, then air layering, grafting, and there are different techniques which can be employed. But in forestry particularly, whatever the commercial species earlier we have adopted, like poplar, acacia mangum, and other species, and a new species like Melia dugia, the cutting method is very popular and easy to propagate, and the uniform planting material. So structure, first of all, I'll discuss, and the nursery, Indian Nurserymen Association as presented, its profile has been presented by Prachi Kohli in the introduction. So they must be knowing the structures, but the other participants who are unaware about the structures we need for clonal propagation of vegetative propagation. So this is just a brush upon. We need mesh chamber where we have controlled conditions, the congenial conditions for propagation of these agroforestry species through cuttings. That means the temperature used to be, for if we talk about eucalyptus clonal protocol that I will discuss, so where we need the temperature around 30 to 35 degrees centigrade and the humidity at about 70 to 80%. So this is the mesh chamber where cooling system is there, and control conditions we can create. So this is inside view of the mesh chamber. This is a photograph I have taken in 2008, and when I was working in Terry in Punjab, the Energy and Resources Institute. So foggers you can see, and root trainer. The cuttings have been placed on stands in the root trainers, and the media utilized is the vermiculite that I will discuss. Again, for hardening from the mesh chamber, that these rooted and shoots emerged plants, they are shifted to the poly house for 10 to maybe 15 to 20 days. Then again, slowly as it grows and adapt to the external environment from the whatever the cutting or plants which we are propagated in the mesh chamber to the natural environment in the open nursery. So if we talk about the equipments, then we need root trainers. So these have the advantage over the traditional poly bags, that root coiling does not occur because ridges are there. These root trainers, they come in different sizes. So first of all, I will talk about the protocol for eucalyptus, then poplar and azurinum. So clonal propagation means uniform, the Xerox copy of the mother tree, or as it happens, not possible in humans. I have put just one photograph, but in animals, if we talk about the examples of dolly sheep and others. So first of all, for clonal propagation, what emphasis the agroforestry policy, and then submission on agroforestry and the national mission on agriculture. The mother tree that has to be selected, which has the desired characters for timber production. That means it should have a straight bole in case of eucalyptus, narrow branch angle, then fast growth with the
companion trees. There are different methods to select the mother tree. That is a different topic. So this the typical we can say the mother tree or the candidate plus tree is presented in this picture, which was selected in Punjab. So the state of the art is that first the mother tree is selected, or directly if nursery producer is interested in clonal plantation of clonal propagation of this eucalyptus, then he can go for purchasing the clones, established clones for different agroclimatic zones, establish those clonal plants in the nursery. Then after 1 year or 1.5 years, when they will attain desirable size, those are hatched back, as you can see in this picture. This is CPT mother tree, and the protocol is to cut the selected candidate plus tree to induce. These are the juvenile shoots. It means if we are taking cuttings from the this mature tree, यहाँ से अगर branch से cutting लेते हैं तो वो juvenility उसमें नहीं होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे sacrifice करना पड़ता है इसको इंडिविजुअल को, तो उसमें से जो नई शूट्स इमर्ज होती हैं उसको those are used as cutting material. So as I said, if this process, the mother tree selection, this is for the clonal evaluation. Whatever mother tree we have selected, whether it will be behaving as a fast growing in the field, that is a different route. But for clonal propagation, the established clones like 3164, 132070, there are several clones of eucalyptus. So those can be established. In the first picture you can see, this is the clonal vegetative mother garden or vegetative multiplication garden of clone 316 established in Punjab. So different clones can be established according to the suitability of the clone to the climatic condition. Then when they attain this size, whole size, they are hatched back just 1 to 1.5 feet from the ground level, okay, to induce new shoots, that is juvenile shoots. That should be given slant. In this picture you can see that the labor has cut and he has not given the slant cut, but in the picture in the right, in the down picture, where you can see several cut clones, stumps you can see where we are given slant cut. So from this, juvenile shoots will come out like this. And after cutting, hedging back this mother plant, body mixture or COC, copper oxychloride paste is applied to avoid fungal infection. So these are the juvenile shoots. Squarish shoots are taken in case of this eucalyptus when they are round. That means they are over matured. So juvenile shoots, they should be taken for multiplication, for clonal propagation. So emerging juvenile shoots from the coppice stumps in different stages you can see in these photographs. So when आपके पास जब कटिंग्स आ गई है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन गार्डन से, तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अ बकेट, उसमें पानी लेके हम जहाँ पे भी अगर नज़दीक में है, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं रूट ड्रेनर पीछे रखे हैं, तो ये जो बीएमजी है इट वाज वेरी नियर. बकेट में ये जो पहले बकेट रखी है इसमें कटिंग्स को जो जुवेनाइल शूट्स हैं वो लेके आनी है. देन दिस पर्सन इज कटिंग द shoots. So 1 to 2 buds should be there. One should go inside the media, that is vermiculite used in this protocol for eucalyptus. So vermiculite media use करते हैं. तो कटिंग बनाने के लिए 2 buds होनी चाहिए, और बाकी के जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाउडर ये लगाया लास्ट स्टेप में. तो यहाँ इसमें जो लीव्स है वो ऑलमोस्ट 1/3 जो लीव्स है वो ट्रिम करती है ताकि इससे लॉजिंग ना हो. और जो जितना पोर्शन लीव का रखा है उसमें लॉजिक इज दैट इट कंटेन इनिशियली इट हैज टू use food from this portion. Whatever the cutting portion is there and leaf is there, whatever the person will do, it will take food initially from this portion. So this is important to keep.
So vermiculite is mixed, and then root drainers are filled. And quick dip method, that is 4000 ppm IBA is used in case of eucalyptus in powder, chalk powder or talcum powder can be used, and that 4000 ppm concentration IBA can be made, and quick dip is given, and then immediately the cutting is put in the this root drainer in the vermiculite. One bud actually in that should be under the vermiculite or growing media. So after 30 to 35 days in the mist chamber, in the first photograph you can see, यहाँ पे देख सकते हैं कि कटिंग्स रखी हैं, उसके बाद उसमें पहले शूट आएगा. ये जुवेनाइल है, थोड़ा ब्लर्ड है. जो नेक्स्ट सेकंड राइट में जो फोटोग्राफ है उसमें नई शूट आ रही है, एंड रूट ट्रेनर जो है वो नीचे से खुले रहते हैं, ओपन फ्रॉम द बॉटम. So roots, you will see after 40 to 45 days, roots will emerge downward from the these open down portion of the root drainer. So after 70 to 80 days, when 3 to 5 shoots they emerge, and roots have emerged from the root drainer से नीचे दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो उनको हम जो पॉली हाउस में पहले हार्डनिंग के लिए शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उनको ग्रीन हाउस में शिफ्ट करें. एंड देन हियर यू कैन सी द क्लोनल प्लांट्स, दे आर यूनिफॉर्म इन साइज एंड पुट फॉर हार्डनिंग इन ओपन नर्सरी. हियर वी हैव टू सप्लाई न्यूट्रिएंट. इनको जो क्लोनल प्लांट्स है उनको न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा. तो 1% जो 19 यूरिया foliars can be given. So you can see the well-grown clonal plant of eucalyptus. The wall of this the vermiculite can be seen. This is taken out of the root drain. So these are ready for planting. So for clonal propagation, it is if it is not clone directly purchased, or if it has to be selected, then mother tree should have the desired characters. Okay, so this is about the clonal eucalyptus. Then popular, very popular in northern India. So plywood industry and packing case and other industry they are using. So even farmers, they are producing popular seedlings. So the easiest method and well-established protocol for this popular वो है cutting से. So 18 से 25 इंच की जो लंबाई की जो कटिंग है वो लेते हैं. उनका डायमीटर जो है वो 1 से 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की होनी चाहिए, और उनमें 4 से 5 जो है आंख, जिसको देसी भाषा में बर्ड टेक्निकल लैंग्वेज वी कैन से, should have 4 to 5 birds, and they are put after making the cuttings. Upper portion is given slant cut, and down portion which has to be go into the soil, that should be given round cut, and directly they are put in prepared nursery beds in. So selection, first thing, from where will you get the cutting, कहाँ से हमें मिलेंगी? So 1-year-old plant from existing nursery. जो ETP हम लगाते हैं, इंटायर ट्रांसप्लांट पॉपुलर में जिसको बोलते हैं, तो उसमें से इनको दिया जाता है कटिंग्स को, और साइड ब्रांचेस को अवॉइड करना है. यूकेलिप्टस में भी जो सेंट्रल ब्रांच है, जुवेनाइल ब्रांच इन केस ऑफ यूकेलिप्टस एज वेल एज इन केस ऑफ पॉपुलर, तो साइड ब्रांच को हमने नहीं लेना है. तो मेन स्टेम से जो है कटिंग्स को बनाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए लेनी चाहिए. और जिस प्लांट में कोई बीमारी लगी है, डिजीज है और डाइंग ऑफ टाइप के सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो वो उसको अवॉइड करना है. सो फर्स्ट कट द प्लांट्स इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. जो आपने मदर प्रोपगेशन गार्डन बनाया है, उसमें से प्लांट को 2 सेंटीमीटर जमीन से नीचे से काटना है. दैट रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा और उसको ग्रेड कर लेना है बंडल्स में, and then cuttings are prepared. So how these are prepared? So should be with a very secator or sharp
this knife should be used, so bark अपना इसमें कटिंग में छिल ना जाए या डैमेज ना हो, तो इस तरह का अपने को वो लेना है. Sharp cutting instrument, seccator or knife. So maximum number of available cuttings from each plant down to 1 centimeter diameter can be used. Okay, as I said, 1 to 2.5 centimeter diameter cuttings from the ETP or the plants and lady. So all cutting must be immediately submerged in the water, or as I showed the picture in case of juvenile cutting we है कि bucket में उसको डाल के उसको submerge करके रखना है, desiccation उसमें ना हो जाए, moisture loss. So treatment before planting, so better to treat the cuttings for any fungal infection जो भी fungus है वो लगा है, तो बेविस्टीन या अल्ड्रीन जो भी अवेलेबल है आपके पास, फंजीसाइड, एमिसान और दूसरे फंजीसाइड से ट्रीट कर सकते हैं. ये कंसंट्रेशन में 250 ग्राम में 100 ग्राम वाटर. सो देन वंस अब जब आपने कटिंग को उसको ट्रीट कर लिया है, सो प्लांटिंग कटिंग बेस्ट दिस स्पेसिंग इज 80 सेंटीमीटर टू 60 बाई 60 सेंटीमीटर. सो स्पेसिंग जो बेड उसका नर्सरी में होना चाहिए 1 to 1.4 सेंटीमीटर बिटवीन जो लाइन्स हैं, एंड नॉट लेस देन 40 सेंटीमीटर बिटवीन plants. This is the general spacing adopted. So सबसे बढ़िया जो टाइम है पॉपुलर में, जो गवर्नमेंट सीजन है जनवरी टू फरवरी, और उसके बाद जैसे ही मौसम ओपन होता है, weather opens up and temperature increases in the February, this and new shoots will emerge. So cuttings taken before, जनवरी से पहले या मार्च के बाद में जब ग्रोथ शुरू हो गई, सैप फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे लेने इसको अवॉइड करना चाहिए. सो irrigation, if we talk about, so should be provided as soon as the planting cutting in bed is completed. So first irrigation should be flood irrigation करते हैं पंजाब में जैसे, या यूपी में जो पॉपुलर लगाते हैं, तो पूरा उसको फ्लड कर देंगे फर्स्ट टाइम पे. एंड सब्सिक्वेंट इरिगेशन जो उसके बाद की होंगी, लाइट हमें उसको पानी देना है कुछ इंटरवल 7 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन सॉइल टाइप. ज़्यादा अगर सैंडी है तो जल्दी उसमें पानी जो परकोलेशन रेट यूज्ड हायर इन सैंडी सॉइल, सो द फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल आल्सो. सो ड्रेनेज उसमें मेंटेन करके रखना है. अगर कुछ फंगस वगैरह का अटैक होता है, अकॉर्डिंगली फंजीसाइड और रूट रॉट है या किसी तरह की बीमारी लगती है, तो उसमें यूज कर सकते हैं. तो फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो यूरिया, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, मैन्योर दैट इज एसेंशियल. सो एप्लीकेशन वेल डिकम्पोज्ड जो गोबर की खाद है 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है नर्सरी में डाल सकते हैं. सो आफ्टर रेन्स, जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, तो 2 ग्राम यूरिया पर प्लांट हैज टू बी सप्लाइड. तो इसमें हम डालते हैं. अगर कॉलर शूट्स उसमें आ रही है, तो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं पॉपुलर नर्सरी में, तो मल्टीपल शूट्स को हमें अवॉइड करना है. तो रेगुलर डी बडिंग मीन्स जो भी उसमें साइड ब्रांचेस आएंगी, बर्ड निकल रही है, आंख निकल रही है, तो उसको हमें रिमूव करते जाना है, सो दैट वी कैन गेट दिस साइड ब्रांच फ्री विप्स, जो पॉपुलर में हम बोलते हैं विप्स, डेड ट्रांसप्लांट्स, वो तैयार हो सके. तो हमने उसको जो कॉलर शूट्स है उसमें सिंगलिंग करनी है, एक ही शूट को रखना है, जो कि अगर जो लीडर शूट है, विग्रस सबसे बढ़िया शूट जो कटिंग में से निकलेगा, उसकी हाइट जब 30 to 35 सेंटीमीटर होगी, वो शूट हमने उसमें कटिंग में मेंटेन करना है बाय दिस बडिंग. सो बहुत सारे जो नर्सरी से एसोसिएटेड हैं, तो दे नोस दैट देयर आर सेवरल क्लोन्स, विम्को क्लोन्स एंड अदर क्लोन G48 there, and for अलग-अलग कंडीशन पे यूपी, हरियाणा, पंजाब, इवन अभी रिसेंटली बिहार में जो क्लोन्स के पॉपुलर क्लोन्स पे ट्रायल्स हुए हैं, सो देयर आल्सो दिस इज promising crop in Bihar also. So recent studies they have shown. So this was about
this clonal propagation of poplar. Then next important species, industrially important species is Casuarina, and this grows in coastal areas and very promising and established species for sand dune, this coastal areas, arresting the soil erosion in coastal areas, and in paper industry, this is coal industry also, Casuarina is used. So there are several even clones of Casuarina. Tamil Nadu Metropolitan, this Forest College and Training Institute has developed clones of Casuarina, new clones of Casuarina. So Casuarina equisetifolia, then Casuarina jumbiana, this JK paper industry they have developed. They have brought this genetic material, मतलब वहाँ फॉरेन से जो है वो क्लोन्स लेके आए हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात में और दूसरी स्टेट में लगाने के लिए. तो इसमें इन केस ऑफ कैजुरीना व्हाट वी डू, जो ये आप ब्रांच डिफरेंट स्टेजेस में देख रहे हैं, सॉफ्ट वुड, सेमी हार्ड वुड, तो इसको क्लैडोड वी कॉल इट, क्लैडोड बोलते हैं. ये पत्ती नहीं है एक्चुअली, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ branch or stem, that is cladode, and it look like pine needle actually. Pine needle intact होती है, बट इसमें आप जब इसको लीफ को क्लैडोड को तोड़ोगे तो ये अलग अलग सेक्शन में टूट जाता है. जैसे इक्विसिटम एक प्लांट है, तो हॉर्स टेल प्लांट बोलते हैं उसको, उसमें भी ऐसे पाइप्स जैसी निकलती है, अगर तोड़ेंगे तो ये डिटैच हो जाएगा. सो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल प्रोपगेशन established protocol in case of this Casuarina में जो है वो through cladode is common method है जो हम adopt करते हैं normally and very easy. This is also practiced in mesh chamber. So similar conditions we can cap in coco peat or in vermiculite, दोनों में कर सकते हैं. So cladode जो होगा 5 से 7 सेंटीमीटर length they are found to be an वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्लोन के लिए सबसे बढ़िया माने गए हैं, पाए गए हैं. सो फर्स्ट as I said, in case of eucalyptus or cuttings of poplar, they are treated first to avoid fungal attack. So any fungicide, mercury-based chloride fungicide can be used, and cutting should be dipped for 30 seconds and then washed in clean water. So this is can be treated or to eliminate fungal attack. So after treating, as in case of both the earlier species, I said, so हार्मोन ट्रीटमेंट इसमें जैसे हमने यूकलिप्टस में 4000 ppm का IBM का सॉल्यूशन रिकमेंड किया था, तो यहाँ पे अपने को 2000 से 3000 में बढ़िया जो परसेंटेज है रूटिंग की, दैट कैन बी अचीव. सो रूटेड कटिंग्स अगेन देयर इज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल, so that can be adopted. Again, for hardening, those can be transferred, that can be raised in this sand, red soil or this media, or in case of vermiculite, or then these are hardening के लिए हम transfer करते हैं poly house में, green house में, then in the open nursery. So one procedure I came across is Chinese procedure for this propagation. Casuarina का propagation के लिए है, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग कि कप्स में, जैसे हम पानी पीने वाले कप्स होते हैं, ओपेक ट्रांसपेरेंट जो कप है, उसमें जो है वो 3 to 4 month एज यंगर जो 3 to 5 inch लॉन्ग जो शूट्स हैं कैजुरीना की, उसको ऐसे बंडल में उस प्लास्टिक ओपेक जो है ट्रांसपेरेंट ऑर्डिनरी प्लास्टिक जो कप होगा उसमें डाल देते हैं, और इसमें IVA यूज करते हैं वो लोग 50 से 100 ppm, either NAA or IPA. So then the cuttings they are soaked 24 hours and removed in this solution, 1 inch rooting hormone solution with this cup, and placed in another cup with only tap water, simple tap water. That is very very cheap technology, you can say. इसमें बहुत कम लागत भी लगती है और रूट ट्रेनर की कॉस्ट जो रिड्यूस हो जाती है. सो उसके बाद क्या करते हैं, कप जो है वो आउटडोर शेड प्लेस में, शेडी एरिया में उसको
रखते हैं. Then rooting apparently उसके बाद 4 से 6 हफ्ते में इसमें rooting आ जाती है. So this is the picture I have taken from this Casuarina propagation cuttings in China. So this is as you see in this, you have seen in case of eucalyptus, the mother tree was felled, and similarly in this case also the selected mother tree और क्लोन, इफ इट इज क्लोन है नर्सरी मैन के पास तो वो क्लोन यूज कर सकते हैं. उसको काटना है जुवेनाइलिटी जो है वो इंड्यूस करने के लिए. तो ये कप्स में फिर उनको शूट्स को जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया अभी उस तरह से तैयार करते हैं. व्हेन इट गोस टू प्लांटिंग साइट. Next important species, new emerging species is Melia dubia. So in this there are several routes means तरीके हैं जिससे हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं. सीड के थ्रू, कटिंग के थ्रू और रूट सकर से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So let's as I discussed in case of eucalyptus. So for seed root propagation अगर हमने सीड से करना है तो हमारे पास जो है जैसे मैंने पहले बताया कि desired characters we should have to look for the best mother tree. Here you can see the two tall, clean, clear bole height with a good clear bole height. These are the best mother trees we can say. तो उनसे हमारे को सीड लेने हैं. बट सिलेक्ट तो हम कर लेते हैं मदर ट्री को, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक seeds from such a tall and clear bole mother tree. Anyhow, we have taken the seeds from these seeds, these CPDs. Then this is how seed collection is done by climbing the tree, and the fallen tree. These fruits are, or drupe we call in case of Melia dubia, those are collected. So in this video, you'll see how this seeds are collected from the mother tree. The purpose of showing this mother tree is that what our agroforestry policy or the whatever the other missions are there, or different agencies are involved in planting the quality, producing the quality planting material, is to show that you will get the planting stock of good genetic worth or better growth only if the seeds are selected from the good mother tree. So this is the objective of showing this video and how the seeds are collected. So important is to collect the seeds from the better selected trees. So here you can see how this fellow will climb up without any aid to fetch the tree from the selected mother tree. It is risky, but when we are talking about propagation or raising quality planting material, good planting stock, then we have to take risk and we have to travel into the forest to select the better mother trees. If you depend nurserymen or propagators or nurserymen, they are reluctant or they used to assign duty. अगर हम किसी को लेबर वाले को बोल देंगे कि जा भाई सीड कलेक्ट करके ला अच्छे ट्री से, आप खुद नहीं जाएंगे तो आपको रिजल्टिंग जो प्लांटिंग स्टॉक मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा. So इस तरह से सीड को कलेक्ट करना. द पर्पस शोइंग जो मैंने पहले बोला कि भैया आपको उसी ट्री से लेना है जो बेटर कैरेक्टर्स आपको बुक जो भी आपकी पढ़ी है उसमें से अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है और उसी में से ही अगर सीख लिया है तो भी आपका जो प्लांटिंग स्टॉक है वो अच्छा तैयार हो. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग this is the mature yellow, pale yellow, and some seeds are there turning brown. So these are mature, and then after drying, the Melia dubia proofs they look like this in the second picture. So immediately after keeping the seeds for 1 or 2 weeks in the open, they are depulped. Depulping is done. Either seeds, the fruit can be जो फ्रूट है कलेक्ट किया है उसको गोबर में स्लरी में डाल देंगे या फिर
चूना के पानी में डालेंगे ताकि ये लूजनिंग हो जाए, पल्प भी हाथ से निकल जाए। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सरी में प्रोपेगेट करते हैं। तो डीपल्पिंग के बाद आपके पास ये जो मिलिया डूबिया का स्टोन आप देख रहे हैं राइट साइड में, फोटोग्राफ राइट टू मी, so this look like this oval shape. सो क्लीन करने के बाद फिर स्टोरेज की बात आती है, तो गनी बैग में हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे से ड्राई करके। सो स्टोरेज के लिए अगर उसमें फंगल अटैक को अवॉइड करना है तो दैट कैन बी सीड्स कैन बी ट्रीटेड विद कैप्टन और बेबिस्टीन 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड फॉर स्टोरेज पर्पस। देन steps comes for the pre-sowing treatment of the seeds, okay, to enhance the germination. उसकी जो germination है उसको करने के लिए, क्योंकि मिलिया डूबिया में जो germination है वो बहुत पुअर है, तो अलग अलग मेथड्स हैं, अभी तक इतने एस्टेब्लिश्ड मेथड नहीं है क्योंकि नया स्पीसीज है। तो हॉट वाटर सोकिंग कर सकते हैं हम पानी में, गर्म पानी में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड ये दूसरा मेथड है। रोस्टिंग ग्रुप्स एट 60 डिग्री, आपने घास वगैरह का उसके ऊपर लेयर डाल के तो जो फ्रूट्स है ग्रुप्स है उसको जलाना है जैसे टीक में करते हैं। स्टोरिंग ग्रुप्स, उसको जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसमें डंप कर देना है, तो उसके बाद उसको जर्मिनेशन जो है एनहांस हो सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो है फार्मर को या नॉर्मल छोटी नर्सरी वाले हैंडल नहीं कर पाते हैं तो डिफिकल्ट है, बट दिस कैन बी यूज्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन बेस्ट वन ऑफ द जो देसी हम तरीका अपना सकते हैं, दैट इज ग्रुप्स कलेक्टेड फ्रॉम स्पिटिंग बोर्ड्स, जो रिगर्जिटेट करती है। बकरी है वो खाने के बाद उसका जो पल्प खा के उसको बाहर निकाल देती है रिगर्जिटेट करके, उसमें भी जर्मिनेशन अच्छी मिलती है और एनहांस्ड जर्मिनेशन मिलेगी। तो ये एक फोटोग्राफ है टेकन, तो इसमें आप जो देख सकते हैं बकरी के जो शेड है उसमें ये जो रेड कलर से एरो मारा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो स्टोन्स है मिलिया डूबिया की, और इनको कलेक्ट करके अच्छी जर्मिनेशन मिलेगी। सो other methods are soaking of groups in cow dung slurry. This is also cheaper method for 10 to 15 days. We have also observed better this germination through this method. Second method what we have adopted is इस जो फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, तो स्टोन में यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ है, तो इन क्रैक नहीं भी है तो हम ये जो रिज बना है यहाँ से उसको सिकेटर से काट देते हैं, 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो इसमें ब्लैक जो आप कर्नल देख रहे हैं ये सीड है अंदर, तो वो एक्सपोज हो जाता है। अदरवाइज ये बहुत ही हार्ड है, जो स्टोन है इसका बहुत हार्ड रहता है, और जर्मिनेशन 6 महीने भी लग जाते हैं। नर्सरी में आपको 1-1 साल के बाद भी जर्मिनेशन मिलती रहेगी, देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसको 2 इक्वल हाफ में काटते हैं उसके बाद काऊ डंग स्लरी में 5 से 10 दिन तक रखते हैं, से भी जो जर्मिनेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। देन सीड सोइंग, द नॉर्मल प्रैक्टिस इज देयर एज फॉर द अदर स्पीसीज। दूसरे हम जो भी तैयार करते हैं, बेड का साइज जो है 10 बाई 1 मीटर का रहता है, तो जितने सीड के डेप्थ है उस तरह से उसको सीड को सोइंग करके वेल इस प्रिपेयर्ड जो नर्सरी क्यारियाँ हैं उसमें डाल के जर्मिनेशन, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डिबलिंग, जो स्टूडेंट है वो डिबलिंग कर रहे हैं और जर्मिनेटेड सीडलिंग्स यू कैन सी यहाँ पे बेड में देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में जस्ट छोटा सा क्लिपिंग है। तो जब ये स्टेज में आपका नर्सरी में जो सीडलिंग जर्मिनेट हुआ है, इतनी हाइट का 4-5 लीफ स्टेज, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने देना पड़ता है इसमें मिलिया डूबिया में, तो अच्छा एस्टेब्लिशमेंट मिलता है, तो उसको थैली में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें फ्लोर भी कर सकते हैं इन द पॉली बैग्स। जब आपने जो हाफ कट सीड जो ये देखें तो डायरेक्टली जिसमें कर्नल दिख रहा है उसको डायरेक्टली नर्सरी में पॉली बैग में लगा के सोइंग कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द लुक ऑफ नर्सरी ऑफ मिलिया डूबिया थ्रू सीड। Then as in case of, as I said, to obtain uniform
and crop with a good genetic worth, अच्छा जो उसमें vigor होगा, so that is possible only through cuttings, mini clonal cuttings or juvenile cuttings. जैसे eucalyptus में प्रोटोकॉल है, सिमिलर प्रोटोकॉल कैन बी इसमें फॉलो कर सकते हैं हम. मिलिया डूबिया में पहले मदर बैंक जो है, मदर गार्डन एस्टेब्लिश करना है. जब 1 साल का हो जाए तो उसको हमने जैसे यूकेलिप्टस में उसको हैचबैक किया है, उसी तरह से करना है, सो दैट वी कैन गेट द जुवेनाइल शूट्स. ओके, सो in this video you can see how these I'm not able to show this full zoom. The stage is similar. First cuttings we have to brought in fresh water. Then after making cuttings, trimming the leaves to 1/3, उनको हम फिर बेबिस्टीन के solution में treat करते हैं fungal infection से बचाने के लिए. So this video is I can't play in full mode. So बेबिस्टीन में 5 से 10 सेकंड रखने के बाद फिर से फ्रेश वाटर में डालेंगे और ये आप देख सकते हैं कि इनको those treated and washed cuttings they are again put in the root trainer in vermiculite or in cocopeat can be used. And first in the 30 to 40 days in chamber उसमें रखेंगे. जब रूटिंग और शूटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर उनको जैसे यूकेलिप्टस में नीलगिरी में किया है, हार्डनिंग का प्रोसेस है, स्टेजेस है, सिमिलर स्टेप्स कैन बी फॉलोड. Another method in this Milia dubia is through root suckers. So this is you can see mother tree से root suckers लिए हैं, उसमें कट लगाया है और IBA 4000 ppm. फिर बेड में उसको नॉर्मल जो मीडिया है, नॉर्मल बेड जो हम बनाते हैं उसमें सैंड, सॉइल और कोकोपीट ऊपर से डाल देंगे और इस तरह से रूट से, ये जो कट रूट्स है उनसे यहाँ पे आपको छोटे छोटे शूट्स जो है जुवेनाइल शूट्स मिल रही है. आप इस बेड में देख सकते हैं, थर्ड फोटो में राइट साइड में ये जो लगाया है. और वेल एस्टेब्लिश्ड इस क्लोनल गार्डन जो है, मदर गार्डन कैन बी obtained, and from here we can get the clonal material for planting. Then another important species is Milia, this Azadirachta indica. So why I have included in the industrially important species, that what our government has decided, and not decided, but we are using neem coated urea. So you must be aware about this thing, that we need this better genotypes or clonal planting material in this neem also. So this has opportunity to be planted in agroforestry, so that we can meet जो हमारी नीम कोटेड यूरिया की डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं और अच्छा जो क्लोन्स हैं इसके क्या बोलते हैं अपना नीम के, और उनको यूज करके जो नीम कोटेड यूरिया के लिए जो मटेरियल हमने यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं. रिसेंटली जो FRI में वालों ने नीम के क्लोन भी यूज किए हैं, जिनमें एजाड्रेस्टिन कंटेंट या जो स्पेसिफिकेशन हमें नीम कोटेड यूरिया के लिए क्लोन के लिए चाहिए वो अभी रिसेंटली यूज किए हैं. प्रोपगेशन जो ट्री इम्प्रूवमेंट डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून. So simply in this there is no commercial protocol as available in case of our eucalyptus, poplar, casuarina and Milia rubia. So this can be propagated neem को हम hard wood cutting से भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कटिंग और 1000 ppm IBA से ट्रीट करके उसको हार्डवुड कटिंग से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं. देन अनदर मेथड सॉफ्टवुड कटिंग. ओके, तो इसमें नीम को हम इस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एग्रोफोरेस्ट्री स्पीसीज इज बैम्बू. So again there are several missions. I think 2 years back our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched a mission on bamboo. So earlier there were several missions also, and industry is coming up for using bamboo for various purposes, furniture,
bridges, makeshift houses, they are being constructed from different species of the bamboo. So very simple and cheap method, इकोनॉमिक मेथड we can say सबसे बढ़िया जो है वो कलम कटिंग से है. तो इसमें बाय मॉडल जो कटिंग उसकी लेते हैं हम 2 to 3 year old हेल्दी कलम से बाय जस्ट कटिंग अबाउट द फर्स्ट मोड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल. सो उसकी लीव्स और साइड ब्रांचेस को हम हटा देते हैं, ट्रिम कर देते हैं. एंड व्हाइल डूइंग सो इंजरी इसमें नहीं होनी चाहिए. जो एक्सिलरी बड है उसको कोई इंजरी ना हो, इस तरह से हमने उनको लीव्स और ब्रांचेस को रिमूव कर दें. सो जो कटिंग है अगेन जैसे हमने उसमें थोड़ी प्रिकॉशन ली थी ताकि डेसिकेट ना हो कटिंग बैम्बू में भी वैसे ही करेंगे कि उसको हम गनी बैग्स में मॉइस्ट करके उसको जो गनी बैग्स है जूट बैग्स रेदर उनमें रैप करके लाते हैं और बॉक्सेस में उनको कोकोपीट को मॉइस्ट करके या मुआस को मॉइस्ट करके या सॉडस्ट यूज करके उसमें डाल के लेके आते हैं. फिर उसमें जो होल है जो पहले आप पिक्चर में ऊपर देखा है इस तरह से जो मग से पानी इसमें IBA का सोल्यूशन हम इसमें डालते हैं उसको ऊपर से कवर कर देते हैं. सिंपल मेथड टू प्रोपेगेट क्लोनल मटेरियल इन बैम्बू स्पीसीज. ये राइजोम से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड इन विलेजेस. व्हाट पीपल डू, सब हम जानते हैं कि वो राइजोम उतार के ले आते हैं. थोड़ा सा ऊपर का जो नोड्स है 2 से 4 नोड उसको रखते हैं. सिंपली दे यूज टू bury that rhizome in the soil and it gets a new plant. So this is the layering is also one of the cheap method in case of bamboos. So another timber species is Dalbergia shishu. So shisham as well as Dalbergia latifolia both can be propagated clonally with the juvenile shoot cutting. Again, as the method I told in case of eucalyptus and Melia dubia. So if released clone nurseryman knows released clone of this Dalbergia shishu and latifolia, then he can bring वो ला सकते हैं और नर्सरी में उसको मदर गार्डन बनाने के बाद उसमें से जुवेनालिटी जैसे हमने उसको यूकेलिप्टस में हैचबैक किया था उसी तरह से शीशम है. दोनों शीशु और शीशम में हम प्रोपेगेट कर सकते हैं जुवेनाइल कटिंग के थ्रू. इवन सिंगल नोड मिनी कटिंग दे हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव गिवन गुड सक्सेस इन केस ऑफ दिस Dalbergia शीशम. Okay, so similar protocol, similar steps they can be adopted as in case of this Melia dubia and eucalyptus. कटिंग्स को हम वर्मीकोलाइट में लगाएंगे, ट्रीट करेंगे पहले फेविस्टीन से, देन रूटिंग एंड शूटिंग दैट इज इंफ्यूज्ड इन मिस्ट चैम्बर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड देन अगेन दे आर ट्रांसफर्ड टू दिस poly house for hardening for 10 to 25 days, then in the greenhouse, then into the open nursery. So in this also root sucker protocol is well established technique, very easy and cheap technique to produce clonal bank or mother garden from where we can have mini cuttings or the cuttings similar to eucalyptus can be obtained through root suckers. So if you see this photograph, mother tree tall and straight clear bole enough, having the characters of good mother tree. So वहाँ से अपने को ये जो रूट्स है जिस तरह से मिले डूबिया में हमने रूट्स दिखाया था उस तरह से इसको लाना है. और आप देख सकते हैं नहर में हम इसको डुबो रहे हैं, इसमें क्या बोलते हैं जूट के बैग में रैप करेंगे और फिर इमीडिएटली डेसिकेशन से बचाने के लिए उसको हम नर्सरी में लाके ट्रेंच में खोद के 1 फीट डीप जो है ट्रेंच खोदेंगे और उसमें जो आप रूट्स लेके आए सक्कर्स लेके आए उनको डाल देंगे विदाउट एनी हार्मोन. इवन इन केस ऑफ मिलिया डूबिया जैसे मैंने बोला कि 4000 ppm जो IB हमने यूज किया, यहाँ पे दलबर्जिया शिशु में हार्मोन यूज कर देंगे तो जल्दी ये जो है मदर बैंक तैयार हो जाएगा
नहीं भी करेंगे तो भी, क्योंकि पंजाब की सॉइल में ये किया है तो वहाँ पे इजीली शूट्स आ जाती हैं. So again, you can see how this clonal propagation is done in case of Dalbergia shishu, and as well as we have tried in Dalbergia latifolia. So there are other several species which are used in agroforestry by various industries also. These could be bamboos and other packing cases species. Those if clones are available, so for nursery men वो जो अच्छा प्लांटिंग स्टॉक तैयार करने के लिए उन क्लोन्स को ला सकते हैं और एक मदर बैंक बना के उसके बाद जो जो उसमें प्रोटोकॉल जिस तरह से बताए हैं और मदर गार्डन एस्टेब्लिश करके जुवेनाइल जो कटिंग है वो यूज करके प्रोपेगेट कर सकते हैं सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल. जो हमारे अलग अलग मिशन में हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो बोल रही है एग्रोफोरेस्ट्री में प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का जो दर्द है कमी है उसको पूरा कर सकते हैं. एंड प्राइवेट nurseries they are playing very good role in case of this eucalyptus. नीलगिरी में अगर आप आंध्रा में और तमिलनाडु इन स्टेट्स में देखेंगे तो छोटे फार्मर्स जो है मार्जिनल फार्मर लैंडलेस फार्मर्स in very very small area they are propagating cutting Nilgiri eucalyptus clones they are propagating and selling to the farmers. This is was well established industry for eucalyptus, ITC and JK, and likewise other industries, Bimco for popular, green plywood, then century plywood, for they are buying Melia. So this is the protocols which can be followed. I mean to say the clonal protocols, not so better to produce the plants through clonal rather than seedling. If you released variety, well improved varieties are there, then farmers or nurserymen can go for those material, but not better to not collect seed material from the inferior trees. It should be from the better trees. So this is all about this. Some of the trees, there are several trees, so in 1 hour lecture cannot be included. So from my side, thank you. Thanks for patience hearing. So anyone from INA? Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Thakur sir. Thank you, thank you. Nice, excellent presentation. Lot of knowledge we learned today. Now topic open, webinar is open for discussion. Any questions from participants? Yeah, please. Because it is sometimes farmers and nurserymen knows better than scientists. We are stuck to 2 or 3 species. You are traveling a lot, and we are our jurisdiction is very small. So you people knows more than we know. So it should be two-way process. If new technology or protocols are there, then that can be shared in this common platform. तो हम उसको साझा कर सकते हैं जानकारी को. तो ज्यादा उसमें तो नहीं होगा हिंदी का प्रॉब्लम इंग्लिश में. तो सब जो हमारा यूकेलिप्टस है या ये केजुरिना केजुरिना है, इसका सीड से प्रोपगेशन का कोई इजी मेथड है, फास्ट हो जाए जर्मिनेशन? नहीं, जैसे मैंने बोला सीड से तो हम इजीली कर सकते हैं, बट अगर तो जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है तो उसका सीड लेंगे तो ही हमें जो हम एम्फोसिस है हमारा गवर्नमेंट का और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स व्हाट दे आर एम्फसाइजिंग. So better to go for clonal. There are leased clones from Metropolis. This MTP 123. They are naming this Casuarina and Miliarubi also. They have released many clones. Even Kadam clones they have released. Now the pipeline clones are Tuna ciliata and other species. So this is how means adopting the clonal route technique. That will ensure uniform this growth and higher productivity.
तो ये इम्प्रूव्ड क्लोन जो आप बता रहे हैं ये कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है हमें इनका प्लांटिंग मटेरियल? किसका है डॉक्टर साहब? केजुरिना का है जैसे। एजुरीना का आपको मेटो प्लान से मिल जाएगा, जेके वालों से मिल सकता है। उनके पास जुम्बियाना के क्लोन्स हैं और मेटो प्लान से मिल सकते हैं। देन अदर इंस्टीट्यूट IFGT भी, दे हैव डन वेरी गुड वर्क ऑन एजुरीना। और अभी उनका जो डस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारा भी एक सेंटर है, डॉक्टर संतोष कुमार उसके वो PI है उसमें। तो यहाँ पे उसका हम जो डस्ट कैरेक्टराइजेशन वो हमारा फॉरेस्ट्री कॉलेज करेगा। तो जो पार्थिबन सर के पास क्लोन्स हैं तो बहुत प्रोडक्टिव है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सर एक सवाल में है, एक यूनिवर्सिटी के पार्ट से था सर। हाँ हाँ हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, थराद का जो नॉर्दर्न गुजरात है, वहाँ सर थोड़ा इश्यू आता है। डिफोरेस्टेशन काफी हो रहा है, डिफोरेस्टेशन काफी हो रहा है। तो जी जो जी। उस पार्ट के लिए कौन सी स्पीसीज आप सजेस्ट करोगे? तो फ्लोरिक सॉइल है, सॉल्टी वाटर है। हाँ नहीं, नॉर्थ नॉर्थ पे अगर देखें तो अभी मैंने द्वारका सौराष्ट्र से, शायद द्वारका सौराष्ट्र में, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मीडिया डूबिया का बहुत सारा जो क्लोनल मटेरियल है वो दिया है। और नॉर्थ गुजरात से भी फोन आते हैं कि हमें मिलिया डूबिया दो या टीक दो। तो जो हमारे पास वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है वही हम फार्मर को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि फार्मर जो है उसको बहुत सारे लोग आते हैं जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं कि अगर वुड लगाओ, ये लगाओ, सल्फर लगाओ। तो मैं जब तक टेक्नोलॉजी वेल एस्टेब्लिश नहीं है तब तक सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ठीक वहाँ पे लगा सकते हैं, पर मिलियडोबिया देन बैम्बू कैन बी प्लांटेड इन सच काइंड ऑफ सॉइल। तो मिलियडोबिया तो कर रहे हैं नॉर्थ गुजरात में, तो सैंडी सॉइल है। तो अभी इतने अच्छे, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि वी डोंट हैव डेटा कि इट हैज गिवन दिस मच ऑफ प्रोडक्टिविटी, कौन सा क्लोन वहाँ पे अच्छा जो हुआ है। तो वो दांतीवाड़ा से वालों के पास जो एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर है काफरी का, उन्होंने भी मिलिया डूबिया ट्राई किया है, प्लस और दूसरे स्पीसीज भी वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमको। एक कुछ चैट बॉक्स में Ramesh Agarwal has asked, so please suggest routing hormone. So as I discussed for NA, naphthalene acetic acid or indole butyric acid can be used in almost all the species. So IBA is common in the protocol, so उसको use कर सकते हैं। Eucalyptus में 4000 ppm well established from ITC and tested by various institutes. Then in Casuarina 2000, 3000. Millia dubia again 3000 to 4000 in case of Dalbergia शिशु, और बम्बू में भी यही 1000 से 2000 ppm का IBA जो यूज कर सकते हैं। So any other question? Yeah, Lucina Avinash Kulkarni, Lucina licosphala is also an important. Yes, I couldn't include because otherwise it could have extended to 2 hours. All species we try to accommodate. So yes, it is a very good species. And in this case also, JK Paper Mill, they have brought clones of Lucina, and I think IAJPB and Metuplan. Then Frida, they have also tested and biomass production ability and of some of the clones of Lucina licosphala they have suggested. So one problem, the general very common question जो पूछते हैं कि ये वीड की तरह हो जाता है, तो कोई भी स्पीसीज को हम ब्लेम ना करें, तो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो वीड भी नहीं बनेगा। उसको हम सीडिंग से पहले हार्वेस्ट कर ले तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ क्लोन्स ऐसे भी है शायद गलत किए हैं जो ल्यूसिना के, और पेपर इंडस्ट्री इसको दे रही है, और वेरी हाई डेंसिटी इट कैन बी प्लांटेड और गुड बायोमास कैन बी हार्वेस्टेड, और अर्ली रिटर्न में इसमें मिल सकते हैं 2-3 साल में ही, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में तो बहुत लो हाइट और उनको तो बायोमास की जरूरत है, तो डायमीटर ज़्यादा अटेन नहीं करना है, तो 2-3 साल में हार्वेस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज मिलिया डूबिया कैन बी हार्वेस्टेड इन 3 to 4 years। तो साहब एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं अविनाश कुलकर्णी जी, और
अपना भाग्यश्री जी, सॉरी जस्ट भाग्यश्री देशमुख जी, उनका बेम्बू स्पीसीज के बारे में था। विदर्भ रीजन में आप कौन सा स्पीसीज सजेस्ट करेंगे विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र विदर्भ? ओके, मैं इट विल बी बेटर कि आप मैं एक कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा शर्मा जी, डॉक्टर साहब। जी सर। तो डायरेक्टली हमारे जो एक्सपर्ट है वो 10 साल से बेम्बू पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे कम से कम 15-20 स्पीसीज होंगे बेम्बू के, कलेक्शन है। तो वो सबसे बढ़िया आपको सजेशन देंगे जेएस पाठ, डॉक्टर जेएस पाठक, तो मेरे कलीग हैं। तो बेम्बू पे आप उनका लेक्चर भी रखवा सकते हैं, बेटर होगा। तो एकदम क्लियर कट आपको इसमें जानकारी देंगे, क्योंकि एक्सपर्ट अगर बोलते हैं तो वो अच्छा रहता है। यस सर। तो इनका जो भी क्वेश्चन होगा वो विजिट कराना होगा, आपको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होगा तो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, जो भी वो सभी आपके सवालों का निवारण कर सकेंगे। और अभी नंबर देता हूँ, यू कैन कॉल एनी टाइम, कल फोन कर सकते हैं। तो मैं वो शेयर कर दूंगा उनका नंबर आपके ग्रुप में ब्रह्मकांत सर के साथ। One more participant, Mr. R.T. Patil, he wants to know about the clonal propagation of guava by cutting. I think it's not concerned about the your. Yeah, actually, this is one of the Agroforestry species, so I have not covered. Mound layering is then most जो क्या बोलते हैं सबसे बेस्ट मेथड है वो गुआवा में, तो माउंट लेयरिंग है, सिंपल है, और उसमें आप इसमें क्लोनल प्रोपगेशन कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू आई वांट टू कम अक्रॉस एनी दिस प्रोटोकॉल कि उसको करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जो करते हैं माउंट लेयरिंग से अच्छे से तैयार हो जाता है। और एयर लेयरिंग, यस, गुआवा में एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। Thank you, Dr. Saab. Thank you for excellent knowledge, and really our participant, I enjoyed with your experience, with your knowledge, and I hope same synergy will continue in future also. Behalf Yes, of the Indian Nurseryman Association, I am thankful to you for sharing such a wonderful knowledge. Thank you, sir. Thank you. I also thankful to Indian Nurseryman Association, especially Mr. YP Singh ji, for organizing a knowledge sharing webinar for participants for nurserymen. With the kind words, I conclude this webinar at the moment. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks again for giving me opportunity, and I wish very good growth